Hello everyone, we are solving problems on partial differentiation type number 1. This problem is continued with previous two lectures in which 4 problems we have already solved. This is sum number 5. If z is equal to tan inverse y upon x, then find the value of dou 2z by dou x square plus dou 2z by dou y square. Z is tan inverse y upon x. We have to find out dou 2z by dou x square and dou 2z by dou y square. So first find partial derivative of z with respect to x. That is partial derivative of tan inverse y upon x with respect to x. There are two independent variables y and x. So we have to consider y as constant because we are differentiating with respect to x. So this is equal to first of all derivative of tan inverse, that is nothing but 1 upon 1 plus y upon x its square into partial derivative of y upon x. Then this is equal to x square upon x square plus y square. Okay, and derivative of y upon x with respect to x, that is minus y divided by x square. So this is partial derivative of z with respect to x. You can simplify this. X square gets cancelled. Hence partial derivative of z with respect to x is minus y divided by x square plus y square. Now partially differentiate once again differentiate this with respect to x to get dou 2z by dou x square. Partially differentiate with respect to x. Then this is equal to derivative of dou z by dou x with respect to x, and this is equal to partial derivative with respect to x of minus y upon x square plus y square. Okay, left hand side becomes second order partial derivative of z with respect to x square, and this is equal to, we are differentiating this function with respect to x, so we have to consider y as constant function. So minus y into derivative of 1 upon x square plus y square, that becomes minus 1 upon x square plus y square its square into derivative of x square plus y square with respect to x, that is 2x. Okay, and after simplification this becomes minus minus plus 2xy upon x square plus y square square of this. This is dou 2z by dou x square. Now we have to find out partial derivative of z with respect to y. This is suppose result number 1. Partially differentiate z with respect to y. Dou z by dou y is equal to partial derivative with respect to y of tan inverse of y upon x, and this is equal to partial derivative of tan inverse of y upon x with respect to y, not with respect to x. This is with respect to y. So 1 upon 1 plus y upon x its square into derivative of y upon x with respect to y, that is 1 upon x. Okay, so this can be written as x square upon x square plus y square into 1 upon x. X cancels with this square, and then partial derivative of z with respect to y is equal to, we can write x upon x square plus y square. Now once again differentiate this with respect to y. Partially differentiate with respect to y. Then this is equal to, we can write partial derivative with respect to y of partial derivative of z with respect to y, and this is equal to partial derivative with respect to y of
x upon x square plus y square. Okay, differentiate this with respect to y considering x as constant. So this is equal to x into partial derivative of 1 upon x square plus y square, and then this becomes dou 2 z by dou y square, which is equal to x as it is, derivative of this with respect to y, that becomes minus 1 upon x square plus y square into derivative of x square plus y square with respect to y, that is 2y. Okay, and this is equal to minus 2xy upon x square plus y square, sorry, here square of this x square plus y square square. Hence dou 2z, this you can say this is result number 2. Now from result number 1 and result number 2, result number 1 is dou 2z by dou x square is equal to this 2xy upon x square plus y square square, and result number 2 gives dou 2z by dou y square is equal to minus of 2xy upon x square plus y square its square. Okay, now take its addition, because we have to find out dou 2z by dou x square plus dou 2z by dou y square, and this is equal to dou 2z by dou x square is 2xy upon x square plus y square its square, and dou 2z by dou y square is minus of 2xy upon x square plus y square square of this. Okay, now this term and this term are same with opposite sign. This is with negative sign and this is with positive sign. So these two terms gets cancelled and this is equal to 0. So finally answer is dou 2z by dou x square plus dou 2z by dou y square is equal to 0 for z is equal to tan inverse y upon x. For z is equal to tan inverse y upon x, this is equal to 0. This we have proved. Now यहाँ पे क्या दिया है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x दिया है, और इससे हमें प्रूव करना है dou 2z by dou x स्क्वायर प्लस dou 2z by dou y स्क्वायर. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रूव नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये पहले फाइंड आउट करना है. इसके लिए पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, dou z by dou x, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, और z का वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन x, पुट किया और पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो ये आता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज dou z by dou x. अभी दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये ऐसा पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dou z by dou x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. ये ऐसे लिखना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बनेगी dou 2z by dou x स्क्वायर. ओके, एंड विच इज इक्वल टू माइनस वाई विच इज कांस्टेंट, बिकॉज क्योंकि हम डिफरेंशिएट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो रहेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो 2x आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट नंबर 1 मिल गया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर. सेम ऐसे ही हमें क्या करना है कि पहले हमें dou z by dou y फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स y अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y किया हमने, तो इसका रिजल्ट आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को. तो हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव x कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, क्योंकि क्या है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो अनदर वेरिएबल हमें कांस्टेंट एज्यूम करना है. x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमें ये फार्मूला मालूम है, कौन सा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 अपॉन x. ये क्या आता है, 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव आता है देखो माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ x
इट्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये आता है फार्मूला। तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये यूज किया तो हमें मिल गया ये -1/x² प्लस y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 2y आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिला, डो टू जेड बाई डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy/x² प्लस y² मिल गया। अभी हमें क्या, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, डो टू जेड बाई डो x² प्लस डो टू जेड बाई डो y², इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। डो टू जेड बाई डो x² पुटअप किया प्लस इसका वैल्यू -2xy/x² प्लस y² है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल होती है, आंसर आता है 0। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट सम। Let us solve this sum. Yes, sum number 6. If z is equal to x square into tan inverse y upon x minus y square into tan inverse x upon y, then prove that dou 2z by dou x dou y is equal to x square minus y square upon x square plus y square. We have to prove this. Here सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले क्या करना है, डो टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, डो टू जेड बाय डो एक्स इन डो वाई, दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मीन्स फर्स्ट फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सो जेड इज दिस वन, partially differentiate z with respect to y. We are differentiating z with respect to y, that is partial derivative with respect to y of x square into tan inverse y upon x minus y square into tan inverse x upon y. We are differentiating with respect to y. ठीक है, so consider differentiating with respect to y means x and function of x we have to consider constant. So here x square will be constant, differentiate this only, this is equal to x square into partial derivative with respect to y of tan inverse y upon x. Now here this is y square which is function of y, this is tan inverse x upon y which is also function of y. So you can use here u into v formula, u into v, hence minus into bracket first function as it is into partial derivative with respect to y of second function, that is tan inverse of x upon y, plus second function as it is tan inverse of x upon y into partial derivative with respect to y of y square. Okay, so using this we can write this as x square derivative of tan inverse of y upon x with respect to y, considering x as constant. So 1 upon 1 plus y upon x its square into derivative of y upon x with respect to y, that is 1 upon x, minus y square as it is. Okay, derivative of this with respect to y, that is what, derivative with respect to y, not with respect to x. X we have to assume constant. So 1 upon 1 plus x upon y its square into derivative of x upon y with respect to y, that is minus x upon y square, then minus plus minus tan inverse of x upon y as it is, okay, into derivative of y square with respect to y, that is 2y. Okay, now simplify and get some result. This is x cancels with this square and this x square into x square upon x square plus y square into 1 upon x
minus y square into y square upon x square plus y square into minus x upon y square. Okay, minus 2y into tan inverse x upon y. Now we can easily simplify this. This square cancels with this x, and then this becomes x cube divided by x square plus y square. Now y square cancels with this, minus minus plus xy square plus x y square divided by x square plus y square. Okay, and then this one minus 2y tan inverse of x upon y. So this is partial derivative of z with respect to y. Now what we have to do? Differentiate this with respect to x. Partially differentiate this result with respect to x. Okay, on both sides. So left hand side becomes dou 2z upon dou x dou y, dou x dou y. This is equal to partially differentiate each term on right hand side with respect to x. So partial derivative with respect to x of x cube upon x square plus y square, okay, plus you are differentiating with respect to x, so y and function of y we have to consider constant. So here taking y square as constant function, partially differentiate with respect to x, x upon x square plus y square, minus 2y partially differentiate with respect to x, that is tan inverse x upon y. Okay, now find its derivative. U upon v formula, x square plus y square square of this, then denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, and derivative of denominator with respect to x, that is 2x. Okay, derivative of this is over. Now plus y square, here also again same u upon v formula, x square plus y square square, x square plus y square into derivative of numerator, derivative of x with respect to x is 1, minus numerator as it is into derivative of denominator with respect to x, that is 2x, minus derivative of this minus 2 times derivative of this 1 upon 1 plus x upon y its square into derivative of x upon y with respect to x, that is 1 upon y only. Again simplify and get the result, that is equal to x square into 3 times x square, that is 3 times x raised to 4 plus 3 times x square y square minus 2 times x raised to 4 divided by x square plus y square square of this, and now simplify this, plus y square into x square, that is x square y square plus y raised to 4 minus 2x square divided by minus 2x square into y square, 2x square into y square divided by x square plus y square square of this, and this one minus 2, this will you can take this y square in numerator, y square upon x square plus y square, square of y cancels with this y, and then this is equal to minus 2y upon x square plus y square. Okay, now simplify.
you can take x square plus y square as LCM of all three terms. X square plus y square square, that is LCM of all three terms. Okay. Now numerator 3x raised to 4, 3x raised to 4 minus 2x raised to 4, that is 1 times x raised to 4. ठीक है, minus 2 times x raised to 4 plus 3 times x square y square. Okay, and now this one plus x square y square plus y raised to 4 minus 2x square minus 2 times x square y square. Okay, and now minus 2y into, this is x square plus y square, and here LCM is x square plus y square square, minus 2y into x square plus y square. Now simplify this. This is equal to, let us correct 3x raised to 4. 3x raised to 4 minus 2x raised to 4, that is 1x raised to 4, and yes, only 1 x raised to 4. Now this term is now y raised to 4, only 1 y raised to 4 is there. This is y raised to 4 with plus sign, okay, and then 3 times x square y square plus x square y square, this becomes 4 times x square y square minus 2 times x square y square, minus 2 times x square y square, that is plus 2 times x square y square minus 2y into x square, minus 2y x square minus 2y cube, divided by x square plus y square to the power 2. Now you can simplify this. Yes, we have to take y here, because minus 2y into tan inverse x upon y, we have to take here y. Okay, then this will be y, and then this becomes minus 2y square. You can simplify this, y gets cancelled, this y you can take in numerator, this will becomes y square, and then finally this 2y square into x square plus y square. And here this becomes 2y square into x square, that is this one, minus 2y square into x square, and 2y square into y square, that is 2y to the power 4. And then after simplification, y raised to 4 minus 2 times y raised to 4, that becomes minus y raised to 4. These two terms gets cancelled, remains this is equal to x raised to 4 minus y raised to 4 divided by x square plus y square square. Now in numerator you can apply a square minus b square formula. So finally this can be written as, this is equal to this x square minus y square into x square plus y square divided by this one, x square plus y square its square. Now this gets cancelled with this square and remains only x square minus y square divided by x square plus y square, and this is equal to right hand side of the statement which we have to prove. Okay, and this is left hand side, LHS of the statement which we have to prove. You can check here, dou 2 z by dou x dou y, this we have to prove x square minus y square upon x square plus y square, which we have proved here. You can check here. Okay, so once again I would like to repeat the same in Hindi. ये सम नंबर 6 है टाइप नंबर 1 का, और यहाँ पे हमें z का वैल्यू दिया है, फंक्शन ऑफ z इज गिवन,
एंड वी हैव टू यहाँ पे प्रूव करना है डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है एंड और उसके बाद डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएट किया इस दिए हुए फंक्शन के, तो ये आता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे तो एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट लिया और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया, और यहाँ पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ y है ये भी फंक्शन ऑफ y है, तो माइनस हमने ब्रैकेट में u इंटू वी फार्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव का, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो ये मिल गया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू y ये मिल गया। ओके, एक्स क्यूब अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, एंड देन इसके बाद इस रिजल्ट को हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई मिल जाएगा, विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, और जो राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो जाएगा तो जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है इस साइड का भी, तो इसको डिफरेंशिएट करते गए और सिंप्लीफाई करते गए तो फाइनली हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इस तरह से ये सम हमने प्रूव सॉल्व किया। ये दिस इज 6th सम ऑन टाइप नंबर 1 ऑफ partial differentiation. Okay, thank you for watching the video. Thank you all.